Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Wonderful. साइलेंस में बैठ के पर ओम शांति मुख से उच्चारण करना है ट्रांसलेशन। दादी यहाँ से कर रहे हैं नहीं अभी करेंगे। ऐसे To be in silence and then to say Om Shanti is very beautiful प्रैक्टिकल है and very practical. सीधा ही ओम शांति बोलो तो अंदर से मैं मेरा का जो थोड़ा कितने समय का 63 जन्मों का आया आदत पड़ी हुई है। We've had the habit of having I and my for 63 births, and so if we go straight into Om Shanti, we don't get that same feeling. वो एक धक्का से छोड़ देना, एक धक्का से ओम शांति। ओम शांति लाइट बन गई, माइट आ गई। And so at a stroke, within a moment, Om Shanti liberates us and we're able to be free. So we see ourselves and there's light, we see up above and there's might. बोल चाल सब बदल गया। Words, behavior, everything changes. सभी थोड़ा सा भले पास्ट जाओ। Just for a moment, go into the past. प्रेजेंट में कहाँ हो? Where are you at the present? मैंने जयंती को बोला क्लास ये कराने वाले हैं, मैं क्लास क्या करा? Daddy said before coming here, you people do classes, I don't do a class. मुझे तो निर्वाण धाम में रहना है। I want to stay in the land beyond sound. दिखाई पड़ता था वाणी में आना क्या है जो बाबा ने मावा के उच्चारण किए, जो दिल में समाए, वो धारणा में आए, वो जीवन आप सबके सामने है। Whatever are the versions that Baba has spoken, we heard those, we merged them into our hearts, and then we follow them through in our life, and you can see all of that in a practical way in front of you, and after all of that, then we come into words. ये 2-4 दिन की मूलियाँ आज की भी मूली पढ़ के कार में पड़ी। The last few days Murlis and today's Murli, I read it in the car as I was coming up the mountain. बाबा किसी तरह से भी शिव बाबा ने इस तन को लेकर के हमको अपना बनाया है। Shiv Baba took the body of Brahma Baba and made us belong to him. तो जैसे हमको अपना बनाया है ऐसा होशियार है जो पर एक संबंध नहीं, माता पिता शिक्षक सखा सतगुरु। He makes each one belong to him, and he's so clever that it's not just through one relationship, but mother, father, teacher, friend, Satguru.
सत्युग में भी लौकिक बाप होगा, In Satyuga also we'll have the physical कलयुग father. में भी होगा, And in Kali Yuga also the लौकिक physical बाप father. सदा होगा, We'll always have a physical पर father. उसमें सर्व संबंध हो वो एक ही बार ये अब भी होता है. But only once now is it possible to experience all relationships with one. अभी ये वंडरफुल बात है. This is something wonderful. अभी ये सबको पता है. मैं क्लास में क्या सुना, All of you know these things. What should I tell you in क्लास चाहिए, class? Do you want to hear a class? क्योंकि ये क्लास नहीं चाहिए, प्रैक्टिकल करना है. Well, this isn't just a class, but these are the things that you have to do in a practical way. तो दूसरे को सुनेगा ना, वो प्रैक्टिकल करेगा. So that then whoever listens also begins to do it in a practical way. कम से कम जो देहबन का बोझा, देहबन थोड़ा भी है, उसका बोझा है. If there's even a little bit of body consciousness, it becomes a burden. बताओ किसने ने सारा बोझा उतार दिया? Tell me, who has removed totally the burden हल्का है. and is light? जो हल्के हैं. हल्के माना Who is light? पंखा आ गए. One with wings. इतना फर्क पड़ गया है. There is such a difference. अभी एक बारी हंस बगला दोनों रखो या. We should keep a little image of a swan and a stork. हंस कैसा होता है, बगला कैसा? What is a swan like? What is a stork like? परंतु ये कहाँ कोई न हंस है न बगला है. But sometimes there are some who are neither swans nor are they Bugla. storks. पर हंस कहे ये ऐसा वायुमंडल से सबके हंस मंडली. And this is a gathering of swans, and so everyone here is part of that gathering. इसलिए मेडिटेशन हॉल में जो योग का प्रोग्राम था, मेडिटेशन हॉल में मुझे भूलता नहीं, बहुत अच्छा था. Daddy remembers the yoga we had in the meditation hall in Pandav Bhavan at the start of the month with the plus 35 years Actually, retreat. And she's तीन saying, दिन I था can't ना? forget it. 3 दिन. तो अभी ऐसे भले प्रोग्राम ना हो, Even if there isn't a formal program, ऐसा प्रोग्राम बना करके अनुभव. create a program for yourself and experience this. जैसे त्याग और तपस्या की मूर्ति बन गए. So that you become the embodiment of renunciation and tapasya. एक है योग, One दूसरी is है तपस्या. क्या yoga फर्क है? and the other is tapasya. And what's the difference? तीसरी है याद, And the third is remembrance. की यात्रा कहा है. And when we say याद की यात्रा, remembrance, Yoga ka we bal. say it's the pilgrimage of remembrance, the journey. और तपस्या. And we say it's the power of yoga. तुम बताओ फर्क क्या है? ऐसे पूछो. Is there a difference?
याद किसको करना है? Who must I remember? कौन करे? Who is remembering? किसको करे, कौन करे? Who am I remembering and who is remembering? आत्मा को परमात्मा की पहचान आने से याद आती है. As soon as the soul has the introduction to the Supreme Soul, the soul remembers the Supreme. ये मैं जैसे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, जानना, मानना, पहचानना, फिर To understand, उसकी to automatic accept, to recognize. पहचान लिया, जानना तो सही, I've understood, दिल में माना भी I've accepted अभी in मुझे my पहचान heart, आ गई है. and then I say, now I recognize. ऐसे कितनी प्राप्ति है. There's so much attainment from this. इसमें गुप्त छिपे हुए भी कोई पाप पैन कट जाते हैं. And the incognito sins that we've accumulated are removed through this. फीलिंग आती है. I get that feeling. तो वो पाप कटते हैं ना, तो लगता है आत्मा स्वच्छ हो गई है. And as the sins are removed, the soul feels that I've now become clean. अच्छे कर्म करने के लिए ऑटोमेटिक है वो शक्ति काम करा रही है. And automatically there's a power that's inspiring me to do good karma. बड़ी आत्मा में योग का माना बाबा के याद का बल आया है. And the soul has the power of remembrance, the power of yoga filled within it. उसमें मुझे दो बातें प्रैक्टिकली कई बार स्मृति में रहने से मैं बाबा का शुक्रिया मानती हूँ. When I stay in the awareness of two things in particular, I give a lot of thanks to Baba. क्योंकि जब हम कहते हैं ना मेरा बाबा, बोलो, When we say this, Mera Baba, फिर बोलो मीठा बाबा, बोलो ना, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा. अभी हमारे से कोई गलत काम तो नहीं होता है, अच्छे काम ऑटोमेटिक हो रहे हैं. then we can feel that yes, truly there are no wrong things that are happening anymore, but rather automatically a lot of good karma is happening. और बड़ा फायदा ये है और भी करने लग पड़ते हैं. And the beautiful thing is that great benefit that others also begin to do the same. जयंती राइट, अगर मैं करूं तो मेरे लिए तो फायदा है. If I do और what जो is ऐसे right, it's करूं benefit for me. तो सब करने लग पड़े. But if I do what is right and everybody else starts to do that, आगे हम बाबा को देख करके जो पढ़ते थे दिल को लगता था पर हम भी ऐसे करेंगे इतनी उम्मीदें नहीं थी. we used to see Baba and we used to read, but we never had that feeling, that hope that we could also do the same. बाबा में वो ईश्वरीय आकर्षण, We could feel
the godly power of attraction in Baba. जिसने आत्मा को दैयवानी बनने में बाबा की कशिश. And because of that godly power, Baba was very much pulled into that stage of soul consciousness. मुझे वो दिन याद आता है. मुझे पहले जब डेनिस को कोर्स करा रही थी तो मैंने पहले दिन ही उसको कहा तो तुम सुनना सोल बॉडी अलग है. कहा मैं कहा सोल कॉन्शियस में कैसे ख्याल होते हैं, बॉडी कॉन्शियस में कैसे ख्याल होते हैं, तुम कल लिख करके आना. कोर्स ने करा. Daddy remembers how when Denise Penn had first done the course, then she met Daddy at the end of the lesson, and Daddy said to her, do you now understand the difference of soul and body? She said yes, and Daddy said, okay, now write a whole list of points of what is the difference between soul consciousness and body consciousness. तो 60 प्रकार के लिखे. And she wrote 60 points. ये सोल कॉन्शियस, ये बॉडी कॉन्शियस. This is soul consciousness, this is body consciousness. सारा अपन को बद चेंज कर दिया. And so she changed herself completely. बॉयफ्रेंड कहाँ गया, घर के सब. What happened to her boyfriend? What happened to her home? Free. सभी चेंज. पहली स्टूडेंट है. The first student in London. फॉरेनर में है. सिर्फ कॉन्शियस की बात. It's just a question of consciousness. अभी कुछ दिन पहले कोई पूछता है, यानी ये ज्ञान सारी विश्व तक फैल गया. अभी पूछते हैं चित्त और चिंतन में क्या फर्क है. People say, how did this knowledge spread all over the world? They still ask us this question. And then the other day, somebody asked me the difference between Chit, the memory track, and Chintan, चित्त चिंतन. the reflection. कौन जवाब देगा? Does anyone want to give a reply? अभी पूछती है. Now. कौन जवाब देगा? पूछो. मार्ग से पूछो. Marek? दृष्टांत से पूछो. चित्त चिंतन बताता है. नहीं, ये नहीं बताता. आप बताइए दादी. वो एक दिन के स्टूडेंट वो मैं पुराना पूछता है, बताओ चित्त चिंतन. It was an old student who asked Daddy this question. कोई जवाब दो. Anyone want to give an answer? कौन? क्या बोला? सुनाई देता है दादी? हाँ सुनाई देता है. हाँ. तो कहते हैं कि चित्त जो है वो संकल्प हुआ ना, वो भरा हुआ अंदर है. चिंतन संकल्प चलता है ना,
अभी अभी जो संकल्प चलता है वो चिंतन, चित्त है जो संकल्प मन में भरा हुआ है, चित्त अंदर है, चिंतन Denise चलता Ben है। said that the chitta is the membrane on which all the impressions are absorbed, यदि and the chintan is the thoughts that arise from चित्त और that. चिंतन में यदि उसने बताया ना चिंतन जो उसको छोड़ो, तुमको राइट लगा। यदि चित्त है ना जो कर्म करते हैं, संस्कार बन जाता है ना कर्म के आधार से, वो जैसे कि मन के अंदर चला जाता है। और चिंतन जो है, जो भी हम सुनते हैं, देखते हैं, करते हैं, उसका संकल्प चलता है, चिंतन। आयोजन सब पस्त है। और कोई सब बता। जो भी अनुभव होता वो चित्त पर छप जाता है। हाँ और जो चिंतन है, कोई बात सुनी है, उस बात पर मेरे विचार चलते हैं। अजन में का सूक्ष्म बताने। अभी सूक्ष्म आप बताओ। More subtle. We're sharing with Dadi, and she's saying more subtle. मन, Mind, बुद्धि, intellect, चित्त, memory track, संस्कार, sanskars. मन शांत हो गया है। The mind becomes peaceful. जो 7:30 का गीत बजा है, जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा, जहाँ हमारा मन होगा वहाँ हमारा धन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। That is remembering the lyrics of the traffic control song, the 7:30 song, that wherever my body is, so there will be my wealth and there will be my mind. पहले पहले जब ज्ञान मिलता है ना, When we first understand knowledge, मन शांत होना सीखता है ना, the mind learns to be खुशी होती। peaceful and then we feel happy. तभी मन बुद्धि का भी अंतर का पता नहीं होता। We don't even know the difference between mind and intellect when we first come. तो मन भटकता भी है, The mind stumbles around, कहाँ लटकता का भी है, कहाँ चटकता भी है। it dangles somewhere, it gets stuck somewhere. जैसे छोटी बेबी, Like a little baby. परंतु ज्ञान मिलने से But as soon as तो we have ज्ञान knowledge, ऐसा है, ओम शांति का ही ज्ञान आ जाए। even the knowledge of मैं Om Shanti, आत्मा, that I am a पहले मैं soul, आत्मा शांत, I am a peaceful soul. तो आत्मा का शांति। And the soul experiences peace. फिर और ज्ञान मिलता है। And then we receive more knowledge. तो बुद्धि काम कर, And the buddhi, the intellect, begins to work on that. बुद्धि को जैसे कि आत्मा का परिचय जो मिला ना, बुद्धि ने चिंतन किया। The intellect reflects on the knowledge that the soul has been receiving. तो मन भटकना छोड़ के And the mind stops stumbling around. बुद्धि अच्छा विचार करना की ताकत है। And the intellect has the capacity, the strength to be जैसे able योग to लगा, have good thoughts, good reflections, बल आया, and the soul's able to have yoga and draw strength. वो चित्त सत्य चित्त सच्चाई ज्ञान की चित्त में अंदर घुस गई। They say Sat Chit, and so the truth of the knowledge
is absorbed into the Chit. ये सच है. And the soul says this is the truth. न तो चिंतन तक है पर चित्त Then it's not even सत्य just चित्त reflection on the knowledge, आनंद सर्व but it's absorbed into the self, into the memory, and then the soul experiences bliss. चिंतन में कभी चिंता में भी चला जाता है. Whilst it's just the reflection, it's possible to go into another stage, and कभी the word is संशय very भी आ close, सकता है. the stage of worry, or even that can lead into the stage of doubt. बाबा कहता है निश्चय बुद्धि विजयंती. The expression that Baba uses is that faith in the intellect leads to victory. निश्चय बुद्धि ऐसा खुद में निश्चय, बाबा में निश्चय, नॉलेज में निश्चय. Faith in the self, in Baba, in the knowledge. वेस्ट संकल्प, व्यर्थ संकल्प not allowed. Then waste thoughts are not allowed. आते ही नहीं है. They don't come. मैं देखती हूँ कौन है जो फ्री है व्यर्थ संकल्प से. I'm looking around to see who is free from waste thoughts. जो फ्री हुआ, जो फ्री हुए. बाबा कहता है आजकल हर मुरली में जो बाबा तुम बच्चों को समझाए तो औरों को समझाओ, सेवा करो. In every Murli, Baba's been saying, whatever Baba has explained to you children and you have understood, you now explain to others. जो ऐसी सच्ची दिल से सेवा करने वाले बाबा के दिल में बैठ जाते हैं. Those who do service with a true heart in this way find a place in Baba's heart. बाबा ने आजकल मुरली में यही कहता है. This is what Baba says in the Murlis nowadays. वो बाबा के दिल में बैठ जाते हैं. Those children sit in Baba's heart. जिसके चिंतन में एक ही बाबा. In my reflections, only one Baba, और कोई आता है. no one else. अभी मेरी परीक्षा होती है दिन में बहुत. ये बातों को याद नहीं है, ये याद नहीं पाई. I'm tested many times through the day because I'm asked, Dadi, don't you remember this? You don't remember this? You don't remember this? But I don't remember them, and why should I? जयंती तुम टेस्ट नहीं थी तो तुमको बताया था. You say, we told you, Dadi. तुमको याद नहीं है. You don't remember? मुझे याद नहीं. No, I don't remember. अनादि बना बनाया ड्रामा है. And drama is predestined and is eternal. बाबा ने परसों का बना बनाया, वो The चेंज नहीं होता. the day before, Baba said it's fixed, predestined, it can't be changed. नाटक होता है तो एक्टर चेंज करते हैं, ड्रामा को चेंज नहीं कर सकते. When it's a वो stage, बना हुआ होता है. when it's a stage play, they can change the actors. When it's a film, then you can't change them. ये बाबा कहते बना बनाया ड्रामा है. तुम बाप समान बनो ना. And so Baba says this is a predestined drama and you have to become like the Father. ये संगम युग है ना. It's the confluence age. एक ही बारी ये बाप आता है ना. Baba comes just once.
सारे कल्प में लौकिक बाप मिलता है। You meet your Lokik father the whole Kalpa. संगम युग पर एक ही बार At the confluence age, just once, परलौकिक बाप you meet the Supreme Father. मिलता है। कैसे मिलता है? How do you meet him? उसको अपना शरीर नहीं है, He doesn't have a body of his own. इसका शरीर का आधार रहता है। He takes the ऐसे support of कभी this हुआ है one's सारे body. कल्प में? And that's never happened through the whole of the cycle. देखो हुआ है सारे कल्प में एक ही बार ही होता है। It happens just once in the cycle. वो मेरा बाबा है, And he's my Baba. वो कहता है तुम मेरा बच्चा है। And he says, you are my child. बताओ, मुड़ियाँ पढ़ते हो ना, You read the Murlis, पंजाब जो ना, and so you know the answers. ठीक है? It's okay. बताओ। दादी आपने जवाब दे दिया? आपने जवाब दे दिया? कोई और प्रश्न नहीं है? क्या? आपने जवाब दे दिया प्रश्न का, तो और कोई प्रश्न नहीं है? प्रश्न नहीं है। ठीक। Saying to Dadi that she gave us the answer, so this is why nobody else is replying. अभी प्रश्न नहीं है तो निश्चय बुद्धि जयंती की When questions finish, then the intellect has faith and there's victory. तो 108 की There's नहीं बच्ची 8 की मार रहा 8 की वो first there's the rosary of 8 and then the 108. बताओ। कहता नहीं बताऊंगा। क्यों? वो एकदम बाप समान होंगे। The 8 will be absolutely identical to the Father. अभी नहीं बनी, हो सकता है कभी भी अष्टमी कोई आ जाए। And the 8 are not yet fixed. Anyone can still become part of the 8, अष्ट समान होंगे। but you have to become equal. ये कुछ ज़्यादा जरूर है, यानी बाप समान होंगे। लुसियाना पूछती है हाँ, कि आपको कितना नशा है कि आपको ये पता चला है कि आप अष्ट में एक हो। तुमको पता है क्या बाबा? मुझे ये नशा है। Do you know that Dadi has this intoxication? मैं तुमको Luciana's हर्ष से asking, खुश हो गई। what is the intoxication that Dadi has, knowing that she's तुम part आ of the सकती है। 8? And Dadi is saying that Dadi is so happy to see Luciana smiling, कान sparkling, में सुनाऊंगी। and she's telling Luciana, you can be part of the 8. आना। इसलिए बाबा गुरुदादा जी पूछते तू तो आएंगी ना? When I asked Dadi Gulsar, give me the तीसरा names नाम of सुनाओ those ना। who were in the list, and Dadi जो Gulsar पूर्वज will है, say, well, you're one of them उनका anyway. सुनो। पर 108 की एक माला नहीं है निश्चय बुद्धि, क्यों 2-3 माला है भी पहनती है। And the 108 rosary isn't just 108, it can be 2-3 संपूर्ण बनने strands. में समीप आते जाते हैं।
And so they are the souls who have निश्चय के faith बल in the से intellect and have victory, and they come closer and closer to perfection. औरों को निश्चय बुद्धि बनाते जाते हैं। They make others also सेवा develop करते हैं। an intellect filled with faith through serving them. तो पुरुषार्थ के आज जयंती ने कहा सुबह को आओ, शाम को प्रोग्राम है, पर सुबह को आएंगे क्लास कराएंगे। We were तो शाम suggesting to तो Dadi that ये if she क्लास came है ना, early, then she would be able to meet everybody in class, because in the evening it's a मुझे भी program. खुशी हुई है। It'll just be a few minutes of blessings then. मैंने So Dadi's आप happy to सबको be here देख to meet everyone. मैं समझती हूँ जो भी आए हैं पहला बारी मुझे क्यों देख रहे हैं। पहला बारी इस सीजन में या पहला बारी कल्प में? नहीं, पहले वो क्वेश्चन है इस सीजन में। Who's meeting Dadi for the first time this season? इसलिए क्लास के लिए बोला। This is why इसलिए I क्लास came के for लिए बोला। class. पहला बारी कौन देख रहे? And who's seeing Dadi for the first time this kalpa? 1, 2, 3. कहीं है Dadi? कहीं है? Many. Stand up so Dadi can have a good look at you. It's quite a few. First time in this kalpa. First time this cycle. Goodness, it's a lot. दादी देखो, ये सब आपको पहले बारी देख रहे हैं कल्प में। देख ही पहला है। समझो क्लास पूरा हो गया ना, पर ये जो लोग है वो थोड़ा 5-10 मिनट का रुके। ये वाले जो फर्स्ट टाइम यहीं रुके या वहाँ नहीं, ये वाले रुके या जो फर्स्ट टाइम सीजन में मिल रहे हैं? फर्स्ट टाइम कल्पा या फर्स्ट टाइम नहीं, छोड़ दो। छोड़ दो। ठीक है दादी, बस दृष्टि मिल गई। मैं समझती हूँ स्पष्ट और सरल रूप से बातें ऐसी मिली है। You received knowledge which is very clear and very easy. जो याद योग योग से बल मिलता है। So that you feel you're on the journey of remembrance, and with yoga you feel the strength that comes from जो one. बुद्धि याद के करने के लिए भटकती नहीं है। And that strength that comes from one ensures that the intellect, the intellect has the power to discipline the mind, and the mind doesn't wander around. कंट्रोल में है। You're able to control the mind. जब बुद्धि कंट्रोल में है ना, तो खुशी बहुत होती है। When the intellect has that control, there's great happiness. बाबा आज मुझे बहुत खुशी है। Then you say, Baba, today I'm very पता happy. नहीं अंदर से खुशी आ रही है। You say, somehow there's great happiness inside. क्या होता है भारत में जो सती व्रत वाली होती है ना, जो शादी किया ना
बहुत सती व्रत में होती है। तिलक लगाया है, असल कोई आदमी के तरफ दृष्टि नहीं जाएगी। In India, when there would be a marriage, then the woman would have that total faithfulness in which the vision or thoughts would not go to another man. उस पति पत्नी का सच्चा प्यार होता है। And then there's that pure love, true love in that relationship. दुनिया में कोई विरला होता है। But there are rarely a few like that in the world. ऐसे बाबा का भी ऐसे बच्चे से बहुत प्यार होता है। And if I have that sort of faithfulness for Baba, Baba has a lot of love for that soul. क्योंकि वो तृप्त होती है, कुछ कमी नहीं देवे। Because the soul feels very full, very content. It feels as if there's nothing missing. उसको कोई भय नहीं होता है। And such a soul has no fear. कोई डाउट नहीं उठता है। There are no doubts. आजकल के वरदान पढ़ो ना, मुरली पढ़ के वरदान पढ़ो ना, अंदर खाएंगे। After reading the Murli, we read the blessing, and each blessing is wonderful. मैं धारणा का सार और वो 2-3 बारी पढ़ लेती है। I usually read the essence for practical life and the blessing several times a day. तो क्या है, जिनका पढ़ाई से प्यार है ना, तो बाबा कहते हैं उसको है पढ़ाई क्यों, हमारा भविष्य पढ़ाई पर आधार है। When a soul has love for the study, then they are happy because Baba says that my future income depends on my study today. ये जो जन्म है, अंतिम जन्म है। This is our final birth. अंतिम जन्म के अंतिम घड़ियां पढ़ाई में ध्यान रखने से बहुत कमाई है। And in the final moments of our final birth, if we pay attention to the study, there's great income. इसलिए बुद्धि ऐसी है, कुछ बात याद नहीं है, कोई बात कल की बात। And this is why the intellect is such that I don't remember anything of the past, not even of yesterday or this morning. क्यों, आने वाली अच्छी है, आ रही है। Because I'm seeing that the future is a very beautiful one. ये दृढ़ संकल्प, There's determination. 5 अंगुलियों में, ये छोटी ये मोटी, The little one, the fat one, ये मोटी है, the fat finger, ये छोटी है। the little finger. पर ये सहयोग न देवे But if this didn't give its cooperation, तो मोटी क्या कर। what would the fat one do? तो मुझे पुराना ज्ञान है, ये 5 अंगुलियों का ज्ञान। This is really going back to the original Gyan, ये the knowledge of the 5 fingers. सहयोगी बनने के लिए, The little finger, the reminder for सहयोग। cooperation. Wherever you are, give cooperation and service. भाई थोड़ा
even a little bit. ये निश्चय की And then the next finger, the one of faith, the ring finger, विजय, and it's the one for the symbol तो for ये victory. तीसरी आंख खुलती है. And the middle finger, the third eye opens. ये wonderful wisdom. It's a symbol for wisdom. The middle finger. ये अकेली कुछ नहीं कर, अकेली जो करती है ना, ये हो गए तो विक्ट्री हो गई. And the forefinger needs wisdom together, then there's victory. ये हो गए wisdom हो गई. And all three together with faith, then there's wisdom. W. पर सिर्फ ये दोनों हो गए. But if the thumb and the forefinger come कितनी together, दूर है, then everything is achieved. वो चारों पास में है. The four fingers are together, but the thumb is far. पर But the forefinger and the thumb come together, and there's strength. सिंपल बात है. It's simple. उसमें दोनों मिल गए. दृढ़ता Determination. इसको मिला है. When determination, ये अकेला क्या करे, दृढ़ संकल्प चाहिए. when determination is combined with one, then both together can achieve everything. तो ये सिंपल ज्ञान है, It's simple knowledge, पर मिलाना कैसे चाहिए. but how do you bring everything together? ये समझेंगे ना, अष्ट में आ जाएंगे. If you understand this, you'll be part of the 8. कौन आता है? Who wants to be part of the 8? पॉसिबल है It's possible. भाई, पॉसिबल है, पॉसिबल है. तुम बोल रहे हो नहीं है. देखो, मीना क्या कर रहे हो? देख रहे हैं दादी, सुन रहे हैं. अच्छा, ओके ओके, हो गया. Ji Dadi. कुछ रह गया, पूछो. कुछ रह गया, Anything remains? बोलो. कौन आएगा? Who's going to be in the 8? Say me. मुझे लिख करके देना. Okay, write a They note can and tell Daddy. ये वारी मधुबन. This time in Madhuban, have that determined thought. मैं दादी को रात को कहा था मैं कल जाएंगी. आपको कभी विचार है? आज स्नान पर थी, स्नान से निकल के बाहर आई, मुझे छुट्टी देंगे. कबीर बोलो, ये टाइम है. Last night, Dadi Janki was telling Dadi Gulzar her program, that she's going to come up the mountain today. And this morning, Dadi Gulzar came out to say goodbye to her. And Dadi Janki said to her, "Are you planning to come up the mountain? Come up for a few days." आज इसमें कोई जाने वाला तो नहीं है. Anyone leaving today? शाम को अभी नाश्ते खाने के अभी जा रही हैं दादी. ये 2-4 है. 2-4 ही. कल के लिए कह दो, आएंगे. Who's leaving tomorrow? ये कल दादी. ठीक है. Okay. Silence. ठीक है.
Okay, we have a few minutes of silence. नहीं कुछ करो No. पर सुनो सुनो साइलेंस में तभी करो जब भी समझो तो मैं भी अष्ट में आने के लिए भी बस उम्मीद रखती हूँ हो जाएगा. In the silence, have the determined thought that yes, I'm going to be part of the 8. क्यों उसमें हिम्मत है बच्चे मदद है बाप. And if you have Guarantee. courage, Baba will help. This is a guarantee. हिम्मत Your courage. सच्ची दिल से साहब राजी. The Lord is pleased with an honest heart. नियत साफ अंदर में जरा भी शक नहीं है. If your intentions are clean, no doubts inside, बुरा दास then all desires are मैं fulfilled. हिम्मत है बच्चे मदद है बाप. अनुभव तो होगा. Have you all had the experience of when there's courage, the Father gives help? भाई योग गीत अच्छा बजाओ 5 मिनट करो. Okay, we'll जल्दी बंद have नहीं करो. 5 minutes yoga and they'll play a good Best. yoga song. उठती क्यों? नहीं दादी